Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Yog Vaashishtha knowledge series session of evening. Today we are on 35th session. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सायंकाल के सत्र में स्वागत करता हूँ। अभी आज हम लोग 35वें सत्र में पहुंच चुके हैं, तो आप सभी का भी इस सत्र में स्वागत है। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी इस सत्र में स्वागत है। तो रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। लेट अस ऑल क्लोज अवर आइज। अपनी आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। गुरुदेव कहते हैं भूतकाल त्याग करने योग्य है, सुखद या दुखद। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को छोड़ते छोड़ते अपने भूतकाल का त्याग कर दे। यह वर्तमान क्षण नया है। इस नए क्षण की शुरुआत ओम के नाद से करते हैं। ओम का नाद करने के लिए एक गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन कर ले। आवाहनम 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 पुनः पुनः। गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर ले। अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने बुद्धि के अंदर जागृत हो रहा विवेक, अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार, या यदि अब भी अहम का थोड़ा भाव बाकी है तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें।
मुक्ति और मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग यदि इस क्षण मुक्त हो जाए तो उर्वरित जीवन और गुरु इच्छा से यहाँ पे लौट के आना भी पड़े तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए धीरे से अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। Slowly and gradually you may open your eyes. Jai Gurudev. Once again, welcome back. So let's begin with our session. हम लोग आज के सत्र की यहाँ पे शुरुआत करते हैं. So we are going through the chapter number 3, Utpatti Prakaran, the creation of this entire universe. And we have seen that how beautifully Vashishtha Muni is now taking Rama, the petal by petal, he's opening the knowledge by sharing multiple stories. So one such story within story, we are looking at something called as Mandapa Akhyan. The story between the Leelavati, Saraswati and Padmraja. And we have seen that how all of them go through this multiple births. And they, because of the Ashirvada blessings of Saraswati, they are aware about their past birth, their future birth, and their current birth also. So we have seen all these beautiful stories, story after story, story after story. So we have seen the last yesterday is that this particular Leelavati, who happens to travel through the Ativahik, that is Sukshma Sharir, back to the palace of Padmraja, and she is sitting besides the Padmraja's body, who is now dead. And now she is just doing, with the help of a fan, she is just giving him air. Now, meanwhile, what happens? The Leelavati, and Leelavati number 1 means the wife of a Padmraja, she and Saraswati, along with the Sukshma Deha of Padmraja, happens to travel through all the mandalas, all the different mandalas. Then they enter into the Brahmanda of Padmraja, that mandala of that hall. So they enter over there, and then once they come here, there this before that this Leelavati asked this question that Devi, goddess Saraswati, she is referring as Devi here. So there is a Mahavakya which is said that Tat Tvam Asi, Tatvam Asi. Today itself we have sung the Atharva Shirsha, and in the also there is a Tatvam Asi, even that whatever that Paratattva, even Paramatma, I am also the same. Tattvam Asi. So she asks, in this, Tvam is referred to this Jiva. Tat is referred to that Paramatattva. Kindly explain me what is that Paramatattva means here. What does it mean here? So now this Saraswati Devi says that I have already explained you this in detail. We have seen the creation of this entire universe. But as you have raised this question, let me tell you a few more insights about this Param Tattva. Now this Param Tattva, which is in the form of that nothingness, that emptiness. Once upon a time, it gets into something called a Chaitya. And that is means wanting to do something, some Vishayas, attraction, other than itself. So because of that, it forms the Chitta, that is the mind. And now using the Chitta and Chaitya and Chitta, it starts imagining this Kalpanik, this Mithya, this illusion, this entire universe. So now there are multiple things that comes here. They explain the concepts of Jangama. So what is Jangam? That air, that Vayu, that element, air element, when it enters into
the matter. Padartha is what is said, dravya, matter, and then it takes the form of something as a living being. It does have chetana in that. In the chetana roop, it takes that, enters into that dravya, and then if it is movable, then we call that something called as jangama. Means the movable entities in this world, they are called jangamas. At the same time, it also enters into something called as which is non-movable. For example, the vriksha, the plants, the parvata, the stones, mountains, etc. All these things. So if they are not able to move, even though the same chetna is present in them, they are not able to move. They are called as sthavara. No? The one which is immovable. The movable is jangama. The immovable is sthavara. So these things, that sthavar, jangam, sachetan, achetan, jeev, niyati, all these things comes into picture, and then this entire srishti is created. Now, when at the time of creation itself, the characters and their qualities are already defined. By whom? The one who is imagining. If you are imagining something, if you are seeing a dream, in that dream, a particular character, how they are supposed to behave, who will decide that? You are the one who is seeing the dream. You will decide. If there is a movie that is being created, who will decide what the directors will behave? The director of the company will decide, and the one who has written the lyrics, they will decide the one story. They will decide what these characters are supposed to do. Similarly, when this Chaitanya has imagined something in the mind itself, it has thought something about the jangamas and the savars and all the other things, living, non-living things in this creation. So all the 5 elements, if we see, even the 5 elements also have its own quality. For example, the quality of fire is to burn. The quality of water is to flow. No? So likewise, everything has its own qualities. So that is something called as niyati. No? So even the nature, prakriti, the laws of karmas, all these things comes as a part of the imaginated niyati. And one has to go through. Nobody is beyond this niyati, because the creator of this is the one who is thinking this niyati, projecting this universe, himself have thought it should be like this, so it became like that. Okay, so that is called as niyati. So because of that, nobody is beyond this nature, unless and until till now, when they realize that this stool body is not just they are this stool body. They are not just body, they are something more than that. And slowly and gradually they are able to experience the subtle bodies, and finally when they come into the real Swarupa, they are aware about their self knowledge. Atma Gyan ki prapti hoti hai. Then for them all this jad sharir, this deha body, grassroots level body, it doesn't matter to them. So how does this entire vyavahara, means like we interact with each other, we behave in a particular manner with each other, we do buy some grains and do give some money, all these vyavaharas happens in this universe. It's based on some sanketa. That sanketa is nothing but the niyati, what is being created for this by the creator, the one who is imagining all these things. So these are all the things Saraswati keeps on explaining to Leelavati number 1, is the wife of Padmraja. Then the story continues that we have already seen that the particular Raja Vidurat, his they have the Sukshma body, his body, he leaves his own gross body, and then he travels. Then it is explained how these things takes place and how the other things are also important. So he's being taken to the Yoloka, and there they check his credentials, what is it that he did
what karmas that he carried. So they see that he has done the good karmas and all that, and the Yama makes him free. He knows that his body is there in Padmraja's that house, that hall, and he's supposed to go back there. So they make him free. The moment they make him free, now this Sukshma there, no? Ativahik Sharir of Vidurat Raja start traveling towards the Brahmanda of Padmaraja's that mandala. Now the Saraswati and Leelavati, they are also traveling along with him, so they happen to come along with him there. Now here, one that is happening, no, there are multiple questions that comes when the Rama asks that all these things you have explained me, that all these things are created, it depends upon the bhavana, the feelings of the being, whatever the feelings that they go through, the same feelings get translated into the grass level activities, Kriya Shakti. He does the same thing. He actually sees the same thing, whatever happens to him as a feelings, the bhavana. Vichara bhavana, vichar, and then he start projecting the same reality outside him. So then he says, the Rama asks question, okay, so if there is a bad person, Pakhandi Purush usko bola gaya, and he does not do any dharma karya, he does not do any good things in his life, and then he happens to die. After that, if his ancestors do some good karmas, do some punya karma, dana karma, do some good things, and they pray for his well-being, does that reach to him? So here, Vaashishtha Muni is explaining him that whatever the Apta Bandhav, the relatives of that Jivatma, if they do any such thing and they pass on that blessings to him, it actually reaches him. It does reaches him, but according to his own karma and his own thought process and bhavna, the feelings and vasana, even if it reaches him, there is a dvandva that happens between both of them. No? And then the one which is stronger, the one which is balvattar is being said, the one which is stronger, that wins, that takes over. For example, if we have a person who is died, and suppose he is very kanjush, and then he has not donated anything, he has not done any satkarma, he has not done any good deeds, and if he happens to get his son or the relatives, they happen to do some donation and good karma, and if that bhavana reaches to him, what is his bhavana? His bhavana is not to donate. That is so strong in him. So when he comes to know about this, that they have donated, he will grumble there also. Oh, why they have donated? Why they have given up so much money and this and that? So has this good karma has reached him? No. His bhavana was so stronger. His feeling was so stronger. Even there also, these good deeds did not make him any difference. He is again in the same bhavana. So it may help him if these bhavanas are stronger and he is able to see the good things behind it. And if you see again the bad thing behind it, again that is not going to help him. So ultimately it is that person's own bhavana matters a lot, and whatever is more stronger within that wins. What is the message that we are getting here? The message that we are getting here is that it is very, very important for us to work ourselves on our feelings. No? That is the reason that moksha ke char door, for those 4 gatekeepers have been here. Then one of them is called as santosha, having trupti, no? Having that trupti, having that contentment. It is very, very important that whatever you have, be grateful to it. Many people just keep on grumbling, they keep on complaining. Whatever they have, they do not appreciate that. They are running after whatever they do not have. And all these negative emotions, they are jealous about the people around. All this, they are attached, they are entangled, they are jealous, they are greedy. No, all this kama, krodha, lobha, mada, moha, matsara, all these things hover in them, and they are stuck in those very jad feelings. No, they are very much stuck into jadatva. So then, if that is what is going to become and manifest for us,
Is it not a wise thing to have good feelings in us? Is it not a wise thing to modify those feelings through knowledge, modify those feelings through practices, modify those feelings through nice vicharas, no good thoughts, by doing good karma, sadhana, seva, satsang, many tools and guru vachanas, many things. It's a good idea to think, start thinking positive, start feeling positive about yourself, because whatever you think, whatever you feel is what will manifest for you. So there's something called as Atma Pariksha. Just go deeper within and then see what is it that is happening with me. Why I'm suffering like this? What could be the root causes behind my dukkha if it is there? No, this will take us to the root cause. So this knowledge is giving us that power, that understanding. Then Saraswati continues to explain, Vasishtha Muni continues to explain to Rama how these bhavnas, how these feelings are actually created. So they have told us, sharing a concept of this location, sthal, kal, the time, actions, kriya, and the dravya, the matter. No, all these things together called as samagri. And the one who is using this available resources in a good way, in a good manner, to utilize it in its fullest possible potential, no, with the good intentions, with the Shuddha Vasana, with good intentions, their bhavana created out of his obviously will be the good bhavanas. The one who does not understand this, they are all stuck into their own feelings of materialistic world, and then the similar kind of bhavanas generates in them. No? So this hetu, that intention is very, very important here. What we are doing, why we are doing, what is the intention behind it? Is that intention is to spread knowledge? Is that intention is to do seva? Is that intention is to make people feel uplifted? Is their intention to make people free from this suffering? Or is it something little bit small here and there of me and my name and my fame, and people will think good about me and this and that and that? Observe your feelings. Observe from where this is coming. That is very, very important. That has been said here. No, so that is how this. It is very important for us to understand this concept of this kala. Yogya Ved. It is said that it is very important to identify that right time, and then do the action and utilize the dravya samagri, whatever is there with you, utilize those resources for the best possible results. Usually what we do, usually we run after the resources that we do not have. No, what is being said here, whatever the resources are there with you right now, you utilize that, because you have the potential to deliver yourself. Other things are just anyway, just temporarily helping you. So you have that feeling of whenever you start any work, you have a feeling of this work will be completed. No, you have a sankalpa that it will be taken care by Gurudev for us. No, and I am not the doer, he is the doer, he is going to do it. Anyway, he and me is not different. The same Guru Tattva is present here also, and we are praying to that Guru Tattva. And having such intention when we start any work, look at the results. No, the beautiful results. And if at all that particular thing is not good for us, and if that does not manifest, so what? So what? So how? No, see, this amazing journey of Trupti right from the starts, and then obviously the outcome becomes the way it manifests, the way you want. That is when Kashyapa refers, or Gurudev refers to, at the level of working on the level of Sankalpa, working on the level of Chetana. That is what, because they are experiencing this day and night in their life. So it comes from their heart, no? So they could share this beautiful knowledge with us, which we are also blessed to get it here through Yog Vaashishtha. So by explaining this, the story continues.
that both this Saraswati and Leela and Padmraja, so they travel to along with Padmraja, and they happens to go enter into the Brahma Mandala of Padmraja. So they see there that this Vidurata Patni Leelavati, Leela number 2, is sitting there beside the body, and they both of the thus three of them goes there. The moment Saraswati does this sankalpa that let the Vidurat Jivatma enters into the body of Padmaraja, this Jivatma through the Vayu Rup, in Vayu Rupi Prana, that Prana enters to his Nasika, his nostrils, and then he goes there and you see there are so many vasanas are there. All these accumulated things are there. So he enters into this body, and suddenly that all the flowers also blossoms, and he happens to awaken as if he was sleeping. He awakens. So by looking at these things, now he also sees his Leelavati, and then these Saraswati and the other Leelavati. Now, there is a conversation that has been happening between them. So even Rama also asked the question. Very intelligent question. See, he remembers the entire chronology. He says, how come that Leelavati, particular Leelavati, Leelavati number 1, she was sitting there in a body, and then she travels through her Sukshma body, Ativaik Sharir. She travels. What happens to her body? How come she comes here? No, all these questions Rama raises here. So Vaashishtha Muni tells that particular thing, we think that this particular body and all these things are gross, but the one who attained the Sukshma Deha, the one who is able to be in the Ativaik Sharir, for them all this thing, body remains or not remains, it doesn't matter to them. Now the same thing happens to Leelavati also. It doesn't matter to her whether that body is there or not there. Then say, okay, that's fine. But what about when this particular Leelavati will take her own Rupa there? What will happen? What will the other people will say about it? No? So here, Vaashishtha Muni explains him that, look, all the other people, even the Saraswati tells the same thing to Leelavati. Look, these all other people, they are having a very limited Vichar Shakti. Their thinking is very limited. So they will probably think, oh, this another Leelavati is the Maitrin or the friend of the Leelavati. For them, it is, they do not get into such kind of details. So for them, the one who believes that they are not the body, they have realized that I am the Ativaik Sharir. For them, this body, grassroots level body, does not matter anymore. So they are able to travel. So now this Leelavati number 1, who is a queen of Padmaraja, because she has some vasanas still left within her, she can appear there just with the Sankalpa Shakti. She can even appear there in front of them. So when such thing happens, all the other people, they start celebrating that moment, that they think that their Raja, Padmaraja, and their queen, Leelavati, has come back from the Paraloka, the other Loka, other universe. They have come back here and they start celebrating it. So here it is also explained about this, how this yogis, what happens to their Sukshma Deha, how they are able to travel to this using their Ativaik Sharir. We have experienced this a number of times when Gurudev conducts the meditation, and in meditation he takes us through space. He says, expand your mind, and then after some time you forget about your body, and then how do we just go with him with the Sukshma body? Haven't you had this experience? No, Gurudev karate hai. So जरूर कहते हैं, इसलिए स्वामी ओमकारानंद कहते हैं, it's very important for one to do a regular meditation.
No, it is that meditation only will be able to give you the experience of this Ativahik Sharir, Sukshma Sharir. If you are at the grassroots level, you will never be able to understand, even though it is fit in theoretically here, it's not going to help us. So very, very important for us to understand this and to realize this and to experience it. It is very important for us to experience the samadhi, experience the meditation. So then explain that what happens to that body, how does that possible? This is, if somebody is imagining something, somebody is just observing or just doing a dream, and if they in the dream they observe anybody, the moment you come out of the dream, does that matter? Now all those mounters and those buildings and those characters, the moment you come out of the dream, does they exist? Where do they go? They just go and disappear from where they created in the Chitta Akasha. No, there is no place for them. Similarly, whatever you are actually seeing this, हाँ दीपाली जी, अपन हे हिंदी मध्ये सुद्धा सांगणार आहोत. हम लोग ये हिंदी में भी अनुवाद करेंगे, तो थोड़ा अंग्रेजी में इसको पूरा कर लेते, फिर हिंदी में भी इसको बताएंगे. डू नॉट वरी, हम हिंदी में भी इसको जरूर आपको बताएंगे. So then what happens, that this particular thing, she explains her that look, when they travel, attain that state that I am not just this body, then they are able to travel through this. They get access to that subtle energy, which is infinite source of energy. So that is the reason it's very important for us to go deeper into meditation. So all these things, story continues, and then finally, even the Leelavati very bothers about what happened to my body, that body. So she is that when you started traveling through the with the help of your Sukshma Sharir, that is Ativahik Sharir, the subtle body, what happened? It is almost around 30 days have already been passed. Now, as in all these 30 days, you did not eat anything, you did not do anything properly. The care of the body is not taken properly. Because of that, this particular body has decayed, and the other people, what they thought that you are already dead. So they came there and they saw that your entire body has become cold. There is no tej, there is no prana in it, and they burnt you already. They already burnt your that body. So then how come she appear again there? So she says that yes, as you are in that subtle body, and as there is a lot of purity that has happened with you, but even though there is still little bit of that vasana has left, you will be able to get yourself into that physical body also. So with that sankalpa only, this Rani also comes over there, and then they see all each other, and then there is a dialogue that happens between the Padmraja and Saraswati. He asked for the blessings, that let me get the blessing that I will also be in the marga, Parmat marga, and there'll be an samruddhi, there'll be all this Aishwarya and all these things will be there. You'll also get a good wealth and good life and all that. That is the blessing that he asked for. Yeah. And then he continues to live life happily with both of them. And finally, after that, they also get into Videha Mukti. They are also becomes Mukt after this birth, because in the end, they do not have any such vasanas left. They have done whatever they wanted to do. They have realized the purpose of their life, and ultimately they are also, unko bhi mukti or moksha mil jata. So that is what the story continues. This is the end of our chapter number 23. So in the chapter number 24, based on these stories that we have gone through, Rama have multiple questions for Vaashishtha. So we'll go through these questions in detail tomorrow. अभी हम लोग इसको हिंदी में भी थोड़ा अनुवाद इसका कर लेते हैं. तो हम लोग यहाँ पे अभी उत्पत्ति प्रकरण चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को यह परम ज्ञान, आत्मज्ञान यहाँ पे देते हैं. बताते हैं कि जो वही सृष्टि का उत्पत्ति का जो क्रम है, जो अपना चैतन्य स्वरूप चिदा
स्वरूप जो अपना तत्व है उसको एक दिन भ्रम उत्पन्न हो जाता है, चैत्य की निर्मिति वहां पे होती है और वो विषयों के माध्यम से फिर वो चित्त की निर्मिति अपने आप ही कर लेते हैं और उस चित्त में ही ये सब कुछ जो उत्पत्ति का जो प्रकरण चल रहा है, यह क्रिया सब कुछ उसी में होती है ना। उसके ऊपर फिर वो शब्द होते हैं तैयार, आकाश तैयार होता है, उसके बाद में वायु आता है, वायु के बाद में अग्नि आता है, अग्नि के बाद में जल आता है, उसके बाद में पृथ्वी आती है। इन पंच महाभूतों की होती है। वहां पे वो पंच तन्मात्रा भी बताया गया है। पंच तन्मात्रा पंच महाभूतों से यह काल्पनिक सृष्टि का उदय होता है, कल्पना नहीं। इसीलिए बोलते उस परम चैतन्य के अलावा जो भी यह जगत है, दृश्य जगत, यह मिथ्या है। हाँ, इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि उनको बताते हैं। लेकिन ये बात इतने जल्दी समझ में आती नहीं है, तो उसको समझाने के लिए वह अलग अलग प्रकार की कहानियों से हाँ इसका समझाने का प्रयत्न यहाँ पे वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मंडपा आख्यान देख रहे हैं। आख्यान माने स्टोरी, मंडपा आख्यान मीन्स जो मंडप रहता है, जो पद्मराजा और लाली लीलावती जो हॉल बोलते हैं उसको मंडप कहा गया है। तो उसका आख्यान मंडप आख्यान इससे पूरा है। तो हमने देखा कि किस तरह से पद्मराजा और लीलावती और सरस्वती इनकी कहानी यहाँ पे हमें स्टोरी के अंदर स्टोरी, स्टोरी के अंदर स्टोरी करके यहाँ पे सुना रहे हैं। तो हमने देखा कि पद्मराजा और लीलावती का ब्याह होता है। दोनों भी बड़े सुंदर होते हैं और अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हैं, अपने राजकीय जीवन का भी आनंद लेते रहते हैं। तो लीलावती के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि क्या यह रहेगा। तो उनको चिंता होने लगती है। तो फिर वो सरस्वती की प्रार्थना करती है। सरस्वती उन्हें वरदान देती है कि आपके पति का जो शरीर है वो नष्ट नहीं होगा और आपका उनका सोल जो आत्मा है वह जीवात्मा इस हॉल के बाहर नहीं जा पाएगा। और दूसरा वरदान देती है कि जो आप जब भी मुझे स्मरण करोगे आपके पास में रहूंगी, आत्मध्यान आपका मार्गदर्शन करने के लिए। तो इस मार्गदर्शन के साथ वो ध्यान करना भी सीख लेती है, अतिवाहिक शरीर से भ्रमण करना सीख लेती है। और जो अपने पति रहते उनके दूसरे बर्थ, जो उनका बर्थ हुआ है वहां पे घूम के आती है। वहां पे उसको दिखता है कि वो 16 साल के वहां पे बन चुके हैं और उन्होंने अपना राज्य करना वहां पे शुरू कर दिया है। उनको देख के यहाँ पे लौट के आती है। तो फिर उनको मंत्रीगण वहां पे भी दिखते हैं, यहाँ पे भी दिखते हैं। तो प्रश्न पूछती है सरस्वती को, सरस्वती उनका उत्तर देती है। और फिर दोनों के दोनों फिर क्या करते हैं, उसको और समझाने के लिए वो दोनों के दोनों सूक्ष्म स्वरूप से लीलावती और पद्मराजा के पुराने बर्थ में, माने पुनर्जन्म, पुराना जो जन्म था उसमें जाते हैं। वहां पे उनको दिखता है कि जो वशिष्ठ ब्राह्मण है उनकी पत्नी अरुंधति है, वो पद्मराजा और थे। तो उन्होंने भी ऐसे ही एक देख लिया रहा था, उनके मन में जो वासना उत्पन्न हो गई थी तो मुझे ये राजकीय भोग उपभोगना है। उसी की वजह से जब वशिष्ठ ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है, उनके ही चित्त आकाश में वह यह सब इमेजिन करने लग जाते हैं। उनको यह सब दृश्य रूपी स्वप्न में ही उनका यह पद्मराजा का बर्थ उनको दिखता है। जैसे पद्मराजा की मृत्यु के बाद उनको विदुरथ का जन्म दिखता है, वो वहां पे सत्य उनको पता चलता है लीलावती को। एंड देन फिर वो वहां पे उसको आशीर्वाद देती है अपने पुत्र को, उनको दुख से बाहर निकालते, वहां से अंतर में आ जाते। उसके बाद में फिर बोलती कि मुझे वो मेरा जो पद्मराजा जो नए इसमें वहां पे है, मुझे वहां पे जाके देखना है क्या है। इसके बीच में पूरे अपने ब्रह्मांड के कैसे चिदाकाश में कई सारे ब्रह्मांड रहते हैं, उसका सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है। तो आप जरूर इसे पढ़ लेना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत डिटेल में वर्णन किया है। फिर उसके बाद में फिर वो वहां पे जाते हैं। वहां पे वो सिंधु राजा और विदुरथ राजा के दोनों के बीच में युद्ध होता है। और उसमें फिर यह दोनों जब वो सोता है, उनके दोनों उसके सामने चली जाती है। तो विदुरथ राजा फिर सरस्वती को वर मांगता है कि जैसे ही मेरा यहाँ पे यह जीवन काल खत्म हो जाएगा, मुझे पद्मराजा के इसमें फिर से लौट के जाना है। जो उनकी जो पत्नी रहती है सेकंड लीलावती, विदुरथ पत्नी लीला, वो इसी लीलावती की तरह ही दिखती है, बिकॉज उनका ही वैसा संकल्प रहता है कि उनको ऐसा राज्य प्राप्त हो और वैसी पत्नी प्राप्त हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो अपने लास्ट समय की जो अपने विचार रहते हैं, वो भावना रहती है, वो किस तरह से हमें पुनर्जन्म में नेक्स्ट जन्म का भी विजुअलाइज करने में वही चीज हमें इसलिए बोलते कि आप प्रैक्टिस करो इसकी, ध्यान में रहने की, योगाभ्यास करो, मेडिटेशन करो, यह बहुत जरूरी है। अपने भक्ति में रहो,
अपना नामस्मरण करो, जप करो, ये सारी चीजें बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऐसा बताया गया। अभी वो वहां से निकल के उनको बोलते, फिर वहां से निकल के उसकी विदुरथ राजा की मृत्यु हो जाती है, उनका सूक्ष्म शरीर वहां से निकल के फिर यम राजा, यम के पास जाता है। यम उनको बोलते इनके पूर्व कर्म क्या थे, उनके पूर्व कर्मों के आधारित उनको वहां पे से मुक्ति दे देते कि बोलते जाओ, जो करके है वो अभी भी पद्म राजा की वहां पे वहां पे तुम्हारी राह देख रहा है, तुम यहाँ से मुक्त हो। तो फिर वो पद्म राजा का जो सूक्ष्म देह होता है वो, और सरस्वती और जो लीलावती है उनका सूक्ष्म देह वहां से निकल के यहाँ पे पद्म राजा के ब्रह्मांड में आने के लिए निकलती। जो उनकी पत्नी लीलावती जो रहती है, विदुरथ पत्नी जो रहती है, वह पहले ही वहां से निकल के अतिवाहिक शरीर से यहाँ पे आके यहाँ पे सदेह रूप में पद्म राजा के बॉडी के पास वहां पे बैठी होती है। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई गई है कि जो अपना एक प्रश्न यहाँ पे लीलावती पूछती है, पद्म राजा की पत्नी लीलावती, लीलावती नंबर 1 सरस्वती माता से पूछती है कि जो मैं महावाक्य मैंने सुना था, तत्त्वम असि, तत्त्वमसि, हमने आज ही अथर्व शीर्ष का पठन यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वहां पे भी तत्त्वमसि आता है कि मैं ही वही हूँ। नो, तत्त्वम, त्वम मीन्स मैं खुद, तत् मीन्स वो परम तत्व, असि मीन्स हम लोग वही है, सेम है, परम तत्व ही है। तो बोलते उसमें यह तत्व क्या है, ये परम तत्व है क्या, ऐसा प्रश्न लीलावती पूछती है सरस्वती को। तो बोलते सरस्वती बोलती इसका तो वर्णन हम लोग पहले ही बहुत अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन अभी तुमने प्रश्न उठाया है तो मैं पुनः एक बार तुम्हें बता देती हूँ। तो बोलते जैसे ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जैसे विषय आया और वो चित्त वहां पे क्रिएट हुआ, और चित्त में ही उन्होंने इस तरह से इमेजिन कर लिया, फिर उस वायु रूप में जो चेतना है, सचेतन चेतना है, वह जब इसके अंदर आ जाती है, सजीव रूप में, सजीव जीव में आ जाती है, उस वक्त वह लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग दो टाइप के होते हैं, मूवेबल और इमूवेबल, इस प्रकार के वहां पे सृष्टि में निर्माण होती है। तो बोलते हैं जब वो किसी मूवेबल इसमें चली जाती है तो उसको कहते हैं जंगम ना। तो जैसे हम लोग हैं, हम हिल डुल पाते, चल पाते, भ्रमण कर पाते, तो हम लोग जंगम हो गए। देन इसके अलावा जो पत्थर रहते हैं, वृक्ष रहते हैं, उसमें भी वही चेतना उसके अंदर जाके स्थित हो जाती है, लेकिन वो इमूवेबल रहते, घूम फिर नहीं पाते, इसके लिए उनको स्थावर कहा गया। तो बोलते यह जंगम, यह स्थावर, सचेतन, अचेतन, जीव, नियति, यह सारा किसने क्रिएट किया गया? यह जो उत्पत्ति के वक्त जो अपना समष्टि का जो चित्त है, समष्टि का जो मन है, उन्हीं की कल्पना से यह सब कुछ तय हुआ है। लेकिन हमारे व्यवहार के लिए यहाँ पे यह सब बातें एक नियति की तरह हमें मिल गई। नियति माने क्या? जिस वक्त जो अपना रचयिता है, जो वो है, उसका उनका चित्त है, उन्होंने चित्त में जैसी कल्पना की, वो कल्पना ही अपने लिए हर एक पदार्थ के जो गुण धर्म है उन्होंने कल्पना की, वह हमारे लिए क्या बन गया? नियति बन गई। जिस तरह से हम लोग स्वप्न देखते हैं और स्वप्न के अंदर किसी कैरेक्टर का बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, वो हम ही लोग मन ही मन में उसको इमेजिन कर लेते हैं, तो वह कैरेक्टर उसी तरह से बिहेव करते हैं। जैसे कोई एक मूवी बनाता है डायरेक्टर, तो वहां के कैरेक्टर किस तरह से बिहेव करते हैं, वो स्टोरी राइटर और डायरेक्टर डिसाइड करता है। इसी तरह से जो रचयिता है, उन्होंने जो यहाँ पे जो सृष्टि का निर्माण हुआ, उसमें जो अलग अलग पदार्थ है, देश और काल की संकल्पना है, और जो द्रव्य है, यह जो सारी चीजें आती है, उनका एक स्वरूप, उनका एक गुणधर्म बनाते समय ही उन्होंने वैसे बना दिया है, और वही अपने लिए नियति बन जाती है। जैसे कि अग्नि का काम होता है जलाना, और वायु का काम होता है भ्रमण करना, जल का काम होता है बहना, नो शांत करना। यह सारी जो यह बनाई है, वो नियति ने ही उस वक्त वैसा सोचा, इसलिए हमारे लिए वह नियति वैसे बन चुकी। इस नियति के परे कोई नहीं है, हम लोग सब इस नियति से ही जुड़े हुए, और जो अपना दैनंदिन जीवन में हम लोग व्यवहार करते हुए दिखाई देते जग में, वह सब यह व्यवहार उस संकेतानुसार, उस नियति अनुसार भी है हम लोग करते हुए दिखाई देते। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अच्छी चीज हमें समझ में आती है
कि वहां पे प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पे प्रश्न भी पूछते हैं, और यहाँ पे वो चैप्टर में जो विदुरथ है, वो विदुरथ का जो परलोक का जो प्रवास है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से होता है, किस तरह से वो यम के पास जाता है, किस तरह से वहां पे मुक्त वो तीनों के तीनों ट्रैवल करते हुए अपने पद्म राजा के ब्रह्मांड मंडल में आते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मांड मंडल भी कहा है कि कैसे कई सारे ब्रह्मांड, कई सारे चित्त आकाश एक ही चिदाकाश में स्थित है। और जो हम लोग यहाँ पे दिखते हैं वो भूत आकाश होता है, तो वो ब्रह्मांड मंडल वहां पे होता है। तो बोलते हैं कि यह जो भावना रहती है, ये जैसे ही अपने चित्त में भावना रहती है वैसा ही आउटसाइड वर्ल्ड अपने को वैसे ही मैनिफेस्ट हो जाता है। अभी यह बड़ा इंपॉर्टेंट संकल्प है कि जिस प्रकार की भावना हम लोग करते हैं उसी प्रकार का आउटसाइड वर्ल्ड वैसे ही तैयार हो जाता है। तो फिर अगर यह है, यह ब्रह्म ज्ञान हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं लोग किस तरह की भावना उत्पन्न करते हैं। ये जेलसी की भावना, ये देश की भावना, यह मोह की भावना, यह पैसों के पीछे भागने की लोभ की भावना, जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो ग्रम्बल करते हैं, जो अपने पास होता है उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जो नहीं होता है उसके पीछे भागते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं। इस प्रकार की भावना को क्यों हमने पनपने देना अपने अंदर? तो इसलिए कहते हैं कि आप जो है, यह जो भावना है इसको आप पहले समझ लो कि यह भावना उत्पन्न कैसे होती है। तो बोलते ये भावना उत्पन्न होने के लिए 4 चीजें कारणीभूत होती है। एक तो होता है स्थल, जो लोकेशन होता है वो, दूसरा होता है काल, टाइम जो होता है, तीसरा होता है जो क्रिया हम लोग कर्म करते हैं, और जो होता है द्रव्य, जो मैटर होता है। तो यह चारों का जो सामग्री इसको कहा गया है, यह सामग्री से ही अपनी भावनाएं उत्पन्न होती है। तो बोलते जो ज्ञानी रहते हैं, जो अज्ञानी रहते हैं वो इस बात को जानते नहीं है, और फिर वो अपने ही मन में इन शंड्री जो ये विषयों के जो अट्रैक्शन है उसमें फंसे रहते हैं। उसी प्रकार की भावनाएं मन में उत्पन्न होती रहती है, और उनके हाथों से जो मैनिफेस्ट होता है उनके लिए वही होता है। आप घर से जाते हुए भावना करते हो कि मेरा आज यार ये काम नहीं होगा, एंड आप देखते हो कि आपका वो काम नहीं होता है। आप जाके भावना करते हो कि यार मेरा ये काम हो जाएगा, आई एम नॉट द डूअर, गुरु इज देयर, ही विल टेक केयर ऑफ इट, एंड आपका काम अपने आप होने लगता है, क्योंकि जैसे अंदर है वैसे ही बाहर दृश्य जगत में वह मैनिफेस्ट होता है। इस प्रकार से यह ज्ञान हमें बताया गया। तो यदि यह ज्ञान पता लगता है, यदि है, तो अपने जीवन में क्यों ना यूज करें, क्यों ना हम लोग वह जो मोक्ष का द्वारपाल, तीसरा द्वारपाल बताया, तृप्त हो जाए, तृप्त होके जो करना है करे, पहले ही तृप्त हो जाए और फिर अपने काम ना करे, उस तरह की ही भावना करे। मैं जा रहा हूँ कुछ काम करने के लिए, उस तरह का ही संकल्प करे, यह संकल्प फलीभूत हो जाएगा, इस तरह से ही भावना करे। किसी को भी आशीर्वाद दे, तो किसी के बारे में भी अच्छा बोले, उनके भाव में मन में अच्छी भावनाएं रखे। यह सारी चीजें ना, कितना आसान है यह सब करना। हम लोगों को इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। दिस शुड बी अवर लाइफस्टाइल, नो, कि एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर, सब कुछ ठीक है, गुरुदेव के हाथ में, ही इज देयर गोइंग टू हेल्प मी, ही इज देयर सिटिंग विथ मी। हमारे अंदर ही वह गुरु तत्व है, और वह हम सदैव, वह अंतरात्मा हमें सदैव मार्गदर्शन करता रहता है। जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा, वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। या आपने कुछ ऐसा संकल्प किया और वो ऐसा फलीभूत नहीं भी हुआ, तो उससे कुछ ज्यादा अच्छा मेरे लिए होने वाला है। इस तरह की भावना रखने में क्या जाता है अपना, है ना? यह भावना को बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वह योगाभ्यास करना पड़ेगा, वह ध्यान करना पड़ेगा, ना? तो धीरे 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 यह भी हमें, इसका भी आकलन हो जाएगा। अभ्यास से इस चीज का भी आकलन हमें होने लगेगा, अनुभव में यह आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टोरी जो बढ़ रही है उसमें बड़े इंटरेस्टिंग मोड यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं, और राम भी वशिष्ठ मुनि को काफी सारे प्रश्न पूछते हुए दिखाई देते हैं, और जो लीलावती है वह भी सरस्वती को अलग अलग प्रश्न पूछती है। तो जैसे आपने नोटिस किया होगा कि वह जो लीलावती है वहां पे वो दृश्य रूप में वहां पे बैठी हुई दिखाई देती है, और फिर प्रश्न पूछा जाता है कि क्या उन लोगों को, जो बाहर के लोग जो है, जो वहां के आजू बाजू के सेवक है, मनुष्य मतलब, क्या उनको दिखाई नहीं देती वो उसके बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ पे सरस्वती उनको बताती है, राम, वशिष्ठ मुनि राम को बताते हैं कि जो
सामान्य लोग होते हैं ना, उतना ज्यादा सोचते ही नहीं एक्चुअली, इतना ज्यादा डिटेल में जाते नहीं। उनके लिए तो है, कोई तो है, लीलावती है, आ गई है रिटर्न, उनके लिए वही ठीक होता है। दे डू नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ सच थिंग्स। एंड बोलते जो अपने सूक्ष्म देह को, अपने मूल स्वरूप को जान गया होता है, उनके लिए वैसे भी यह शरीर नाशीवंत शरीर का कोई उतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट रहता है, उनको कोई मैटर नहीं करता। तो इस तरह से वशिष्ठ मुनि उसको बताते हैं। तो बोलते जिस तरह से तुम्हारी विचार शक्ति रहती है, जिस तरह से तुम्हारी भावना रहती है, उसी प्रकार का जगत तुम्हारे सामने वह दृश्य रूप में जगत वो मैनिफेस्ट हो जाता है। यहाँ पे और एक चीज भी बताई गई कि कैसे वो स्थूल शरीर जो रहता है वो कैसे मैटर नहीं करता है। तो बोलते जैसे स्वप्न में कुछ दिखता है आपको, आप स्वप्न में कई सारी यह क्रिएट कर लेते हो, पर्वत, ये वो जिस तरह से आपके मन में संकल्पना उठती है, जैसे ही आपका स्वप्न खत्म हो जाता है, उसका क्या रूप होता है, क्या वो एग्जिस्ट करता है क्या? वैसे ही ये भी तो एक इमेजिनेटेड रूप ही है, तो बॉडी का क्या है क्या नहीं कुछ लेना देना नहीं होता है, इट डजंट मैटर। इस तरह से यहाँ पे बताया गया। तो बोलते जैसे जैसे हमें ज्ञान होता है ना, ज्ञान में हम लोग जाते हैं, तो वैसे वैसे यह देह जो है ना हल्का होता जाता है, वो अतिवाहिक शरीर सूक्ष्म देह का यह अनुभव करने लगता है। तो बट यहाँ पे वो ध्यान का इम्पोर्टेंस हमें पता चलता है कि किस तरह से गुरुदेव हमें ध्यान कराते हैं, और अपने को अनुभव अपने अंदर आ जाता है कि किस तरह से अपना जो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म अतिवाहिक रूप से फैलता है। यहाँ वहाँ पे गुरुदेव हमें भ्रमण कराते हैं, तो ये सूक्ष्म देह का अनुभव गुरुदेव कई बार हमें करवाते हैं। So very beautiful thing. It's very important for us to understand this knowledge, not just at the level of intellect, at the level of experience. So definitely it's very, very important to do our meditation, do our sadhana, pranayama, all this regularly. It is very, very important for us to continue to walk on this path. बहुत जरूरी है, no? Otherwise यह ज्ञान सिर्फ एक बुद्धि के लेवल पे ही सुना सुनाया ज्ञान रह जाएगा, अपने अनुभव में आने के लिए और ज्यादा समय इसको लग सकता है। तो बोलते यह जो योगी होते हैं, यह योगी, इनके भी देह की स्थिति ऐसे ही हो जाती है। वो भी अपने स्थूल शरीर को बेसिक स्थूल शरीर का नाशीवंत मानते हैं और सूक्ष्म देह से यह भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी आपका जो इस तरह से यदि आप प्रैक्टिस करते हो, तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत रेगुलेटेड एनवायरनमेंट इसको प्रैक्टिस करें। नहीं तो ऐसा हो जाए कि आप बैठो ध्यान करने लगो और कुछ तो ऐसे ही कुछ करो, और आपका सूक्ष्म देह से आप ट्रैवल करने लगो, आपको पता नहीं है रिटर्न कैसे आना है, उधर ही फंसे रहोगे। इधर लोगों को लगेगा यू आर गॉन and then they will do all your kriya karma. No, all these things are very much possible. That's the reason it's advised to do certain meditation only with the enlightened masters, because they know where to take you, where to bring you back. That's the reason it's not advised to sit in front of computer, put on the this and do this and all. It should be by the master. That's very, very important. So be careful in that. याद रखना ये aspect को. No, that is the reason many people, if you have seen, even our many our teacher, they do not conduct only specified meditations only. They conduct, we as Art of Living teacher conducts only specific meditations like Panchakosha meditation and all that, right? So we don't, whatever the Gurudev does, we don't sit and then chalo let's do it. We don't do that. Nobody does that actually. If you observe it, this is the reason, this is the root cause behind it. तो यह जान लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो योगी होते हैं वह इस सूक्ष्म रूप धार के स्थूल रूप से वह प्रवास कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमें ज्ञान बताया गया। तो फिर वह अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि जो वहां पे जो लीलावती होती है उनके शरीर के साथ क्या होता है। तो बोलते यही होता है उनके साथ, जब वह वहां पे दो सेविका रखी होती है उनके शरीर की तरफ देखने के लिए, वो कुछ देर के बाद देखती है कि करीबन 30 दिन गुजर जाते हैं, उनका देह पूरा निस्तेज हो जाता है, उसमें बिल्कुल प्राण की तरह कुछ नहीं रहता है, और वो पूरा ठंडा पड़ जाता है। उनको लगता है इनका देह त्याग हो गया है, वो उसको बॉडी को जला देते हैं। तो बोलते फिर वो जैसे ही वो वहां पे आते हैं, वो जो पद्म राजा होता है, सरस्वती उनकी संकल्प से उनको कहती कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गेट इनटू द बॉडी। तो उनका जो वायु रूपी जो सूक्ष्म देह होता है, वायु के माध्यम से ही उनके
नासिका के द्वारा उनके शरीर में प्रवेश करता है, वहां पे देखता है कितनी सारी वासनाएं वहां पे भरी पड़ी होती है, उसका अनुभव करता है और फिर वो वहां पे ही वो अपने आप को जीवंत रूप में पाते हैं। तो फिर वहां के वो और जो अपनी लीलावती रहती है, बोलते हैं यदि तुमने तो ये सब जान लिया है, तुम सूक्ष्म देह में यहाँ पे हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी थोड़ी सी जो वासना भी बची हुई है, उसकी वजह से यदि तुम सब करती हो तो तुम भी यहाँ पे अपने मूल स्वरूप में आ सकती हो। तो वही होता है फिर वो रानी लीलावती नंबर 1 है, नंबर 2 वहाँ पे शारीरिक रूप से वहाँ पे संकल्प रूप में वहाँ से आ जाते हैं और फिर वो जो राजा रहता है वो भी सरस्वती देवी से वर मांग लेता है कि उनकी बहुत बड़ा अच्छा उनका राजा वो भी परमार्थ के मार्ग पे चले और उनका वैभव वगैरह सब उनको प्राप्त हो, समृद्धि प्राप्त हो। तो उस तरह से फिर अपना जीवन सब जीते हैं और फिर एक द एंड में बिकॉज सही राह पे चलने की वजह से उन सभी का भी विदेह मुक्ति होके वह मुक्त और मोक्ष हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे कहानी हमें बताई गई। तो यहाँ पे हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 3 में जो 23वां सब चैप्टर है वो हमें समापन करते हैं। 24 नंबर का जो चैप्टर है वहां पे फिर प्रभु रामचंद्र जी इस पूरे कहानी के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं वशिष्ठ मुनि को और वशिष्ठ मुनि उनका निराकरण करते हैं। तो उसको हम लोग कल देखेंगे। आज का यह सत्र हम लोग यहीं पे मेरी पर्सपेक्टिव से हम लोग रोक लेते हैं। यह सत्र आपके लिए खुला कर देते हैं। यदि आपके मन में इस सत्र के बारे में कुछ चर्चा करना है, कुछ प्रश्न पूछना है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको व्यक्त होना है तो आप व्यक्त भी हो सकते हैं। इट्स ओवर टू यू। अनम्यूट का ऑप्शन मैंने खोल दिया है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। Thank you, Someshwar ji, for guiding us through this part and taking us very smoothly, isn't it? So beautifully explained and so lightly, ekdam easily. One thing I liked it is, कि ultimate अगर हमको change करना है, it is like the end product. What we are living today is the end product of our thoughts, feelings, conceptions, everything and everything, whatever we have in our brain, right? Isn't it? So how to do that? Don't you think that? अभी हमको हमेशा, हम जिंदगी में चलते हैं तो हम बोलेंगे कि हमको डिप्रेशन आता है या हमको ये चीजें नहीं मिलती है या मेरे साथ तो ऐसा ही होता रहता है या तो फियर है, एंजाइटी है, all these things, those negative qualities, every time it's given on the plate by our subconscious. But from where is that coming? That is the end product. Okay, but what is the input has to be thought. That is what I liked it. So your input, आज हमारे पास अगर फैक्ट्री है, हम जो इनपुट डालेंगे उसका ही आउटपुट निकलेगा, isn't it? It's so simple, isn't it? So what is our raw material that we put in? That is what it is. So according to the raw material what we put, we get the end product in our hand. The subconscious is ready. Every time the subconscious is ready. But what we do is we ask for success and we don't get a success. Now this is weird, no? We are asking for enlightenment. We are asking to go above the thoughts, but we are not getting it. Or we are asking, like we want to be in the meditation, but we are not getting it. So what is the raw material that you put inside in your brain? That first thought which comes to you, and that is again watered and that becomes the seed. So we should watch our thoughts very carefully that we are doing it. Those ones which are already rooted in our brains are really need to be erased. So how is that going to be? That is going to be when we come here, we hear the knowledge, and that knowledge takes us, washes all that is there,
and those roots are also derooted, so that we can put some new thoughts in that. We cultivate them, we use them. So being here every day, it is like that. And one more thing, what beautifully Someshwar ji said was regarding the santosha. I liked it very much. What is santosha? So one of the qualities that we get, one of them, of course, Dwarpals have four. One of the qualities that we get is santosha. What is santosha means? It's a contentment that we have. See, we have so much, but still the mind is always running behind something. सब कुछ है हमारे पास ही, पर उसमें कभी हमको satisfaction नहीं feel होता है. मन जो है वो दौड़ में है खाली एक बस. उस दौड़ को जब हम शांत करते हैं, तब हम अपने भीतर जा सकते हैं. And that when you feel that contentment within ki, okay, it's fine, I have got so much, let me use those resources. That is what he said. Use those resources in within yourself, and you see you will get so much, because it's already available to you. The intelligence has already given everything to us. But we, they say, I'll tell you a small story. Okay, just 2 minutes. Yeah. And there was one beggar, he was sitting on one place. Whole life he was sitting there and he was begging. Okay. अचानक उसकी मौत हो गई. मौत हो गई तो सबने कहा अभी वो इतने सालों से यहीं पे ही बैठा है. बैठा means people had seen him for years, one place only he was there and begging. So they said, okay, we'll do one thing. We'll, bury him here only. So all of them agreed, okay, that's a very good point. So, they started making the grave for him. और कहा कि हम इसको यहीं पे दफना देंगे. So सबकी राय एक ही बैठी और सबने हाँ बोला, and they went on. So as they were digging and digging and digging, what happened? They see something which was amazing, a wow effect for them. They were pots and pots of golds and coins and everything in that, पूरा ऐसे खजाना भरा हुआ. But what it was just beneath him. But he was like a beggar. He didn't know that. So that is what it is. When we come here, when Guru comes in our life, he says, ki, don't do that now. Come on, you are the king. Just recognize yourself and you see how everything will change. You have everything available to you. Gurudev always says it. Everything is available to you. Just take it. So that is what it is. We just have to take it. It's so simple for us, we don't have to do anything. Of course, just, just छोड़ दो अपने को. बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं करना है, ये सोचना है, वो करना है. Very सहज. That is what Santosha says, completely, entirely acceptance, satisfaction, and content. Just sit on the chair and see one day. एक दिन देखो अपने को खाली सिर्फ ऐसे कि okay, जो होना होगा वो अच्छा ही होगा. बिल्कुल, आज दिन तक तो अच्छा ही हुआ है. हम नहीं चाहते, that is different. But the prayers are answered, and if they are not answered means again there is something better for you coming. So that's why they are not answered. That's so simple, isn't it? But can we relax ourselves? Just sit on the chair and say ki, okay, today I'm not, like I'll be just saying what it is. So wo jo sahaj jo hota hai, that is very beautiful. The universe gives you, everything is given to you at the right time. Everything. Till today, don't we have got it? Morning breakfast milta hai, afternoon lunch milta hai, evening everything. Everything is given, not only the food part, but all the other things are also given to you at the right time. Even if it is not given, so that is not the right time, isn't it? So just be relaxed and sit on the chair and see the picture going on. How nicely this, do you agree with me? This is just one part of Santosha, but Santosha is a very big, you can cover a lot of that in that Santosha. There is no feverishness anymore, and no forcing that I want this, I want this, I want this. That is what it is, मन जो दौड़ता है ना,
उसको शांत करते हैं अपने आप ही, जैसे शांत हो जाएगा, it will settle. You can have other things going on in that also, but then it is okay. Just sit back and relax. That is what Gurudev always says. Just keep on relaxing. So the more we relax, the more we get it. It's like that, right? So if you have any questions, you can ask. I will just pause here because, of course, if I start this, so it is going to be a lot of things to be said on. Let's have the experience of it. So we can just take one part, experience, come back here, share with us, how do you feel it? ना? Maybe we would like to listen. हम भी सुनना चाहेंगे कि आपको कैसा लगता है? ठीक है? So with this, of course, it's getting late. I would allow others to talk. And Jai Gurudev, thank you very much, Someshwar ji, for giving me this opportunity to be here and being with all of you here. Over to you. Thank you so much, Sangeeta ji. That was a really beautiful sharing. We also have Neelu ji with us, Sachin ji with us. Neelu ji, would you like to say something? I just want to say, आप थकते नहीं हो. The way you explained, and just, I mean, kitni sahajta ke saath, so like fluid, it just flows. And then you translate it in Hindi in exactly the same sequence. Half the time I couldn't pay attention because I was just thinking, how's he able to do it? So I just want to actually tell you that I really, really appreciate this. But or the knowledge is getting more and more deeper. And I think I am not worthy of commenting on this. I don't understand that much. I'm still, shall I say, like the farmer plows the field, and sort of makes the land, prepares it before it sows the seeds. I think I'm at that stage where I'm just being plowed and sort of getting ready for the thing. So I really can't comment on this, but I'm really grateful for this group. And today with the Atharva Shirsha and the Bhagavad Gita chanting, it was just wonderful. It's a whole package now. Wonderful. Thank you. Thanks for sharing, Neelu ji. So just look at what will happen when we see the Gurudev. उनका एक कण भी नहीं करते हम लोग अपनी जिंदगी में. We don't even know, सागर में जो बूंद होते हैं ना, उसके भी बराबर नहीं है. That is what he is doing. So hey, so if you think that you are a body, your body will get tired. If you don't think you are not a body, chal raha hai, anyway, it's going on. It is very amazing. We are so blessed that we have master in our life. We also have Sachin ji also in our life, none less than a master. So Sachin ji, over to you. Jai Gurudev. I am not a master at all. I am just on this path only, just like you. I second what Neelu ji said. It's really amazing how Someshwar ji conducting every day with this, and just doing the brainstorming, and he's taking pains in understanding, putting that content to the audience in that flow and that language, and giving examples as well. We have seen how he searches, got us that YouTube's videos also, so that it's giving different perspective, a scientific basis as well, what we are studying. So that's really amazing, because he wants to touch it with all 360 degrees and put it also as a brainstorm session so that everyone can enjoy and everyone can contribute. So really very commendable. I think a service what he is doing, because he is having that background. मुझे अभी जो हम लोग ने सुबह क्वेश्चंस पूछे थे कि राम जी को ऐसे क्या पड़ी थी कि जो उन्होंने इस पे ये किया, ये नॉलेज उन्होंने ये किया, पूछा वशिष्ठ जी से. तो अगर हम अपने लाइफ में देखेंगे तो
जनरली हम क्या देखते हैं कि एक पर्सन है तो उसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मेनली तो एक मॉनेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, दूसरा एक है कुछ फिजिकल एलिमेंट्स या कुछ व्याधि वगैरह हो, और तीसरा एक है कि अ, अभी हम ऐसे देखते हैं कि ये अगर प्रॉब्लम्स है, अगर नहीं है तो भी लोग मतलब संतुष्ट नहीं है। तो इसका क्या रीजन है कि हम कोई भी सिचुएशन में अ, संतुष्ट नहीं होते। तो ये जो है, जो संकल्प विकल्प करने वाली, तो यही माया है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एवरी टाइम वो अपने को स्वस्थ चित्त बैठने नहीं देते। एवरी टाइम इट आइदर इट इज इन द पास्ट और इन द फ्यूचर डूइंग सम ऑल ड्रीम्स। और एक बार मतलब हम हर टाइप के एक्सपीरियंस लेते हैं और उसमें हम छोटे छोटे प्लेजर्स देखते हैं, और अपने को मतलब माइंड भी ऐसा है कि उसको क्विक सॉल्यूशंस मिल जाएंगे तो वो टेम्पररी वो उतना शांत भी हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि उसका अपना जो माइंड का जो नेचर है वो इनफाइनाइट है। उसको हम टेम्पररी सेटिस्फेक्शन कितना भी देंगे तो भी वो टेम्पररी उसमें ही रहेगा, और फिर से वो इनफाइनाइट उसका नेचर होने की वजह से वो फिर से वो अपने को वो शांत स्थिति में नहीं रहने देगा। तो यही एक रीजन है। और दूसरा एक रीजन है कि बाकी इसमें जब सब ट्रांसिएंट, सब फ्लूइड है, सब चेंजेस हो रहे हैं और आजू बाजू सब अलग अलग, वो देखता है कि सुख भी कांस्टेंट नहीं है, दुख भी आते हैं, तो वो बाकी पूरे वर्ल्ड से खुद को एलिनेट देखता है। तो उसके माइंड में वो फियर रहता है कि मेरा एग्जिस्टेंस परपेचुअल रहेगा कि नहीं, क्योंकि आजू बाजू वो डेथ्स देखता है, कुछ फियर होता है। तो ये भी उसका एक ये है कि इसके लिए वो परमानेंट कुछ सॉल्यूशन के लिए कोई आध्यात्मिक गुरु या कोई ऐसा जिसके पास वो कुछ सोलस लेके मिलेगा ऐसा, या सिक्योरिटी मिलेगा ऐसे वो ढूंढता है। लेकिन वो भी टेम्पररी रहता है, क्योंकि उसको जो प्लेजर्स है वो तो पूरा वो छोड़ नहीं सकता, और उसको ये भी मिलेगा तो भी अच्छा है, ऐसा एक मतलब ये है। मतलब वो जो सॉल्यूशंस ढूंढता है वो भी टेम्पररी ही ढूंढता है, वो परमानेंट इसमें नहीं जाता है। तो चलो अभी मैं ये डॉक्टर के पास जाता हूँ, ये इसके गुण नहीं आया तो दूसरा डॉक्टर देखता हूँ, ऐसे वो हर एक इसमें घूमते रहता है। लेकिन हम नॉर्मली ऐसा हम लोग को एक क्विक सॉल्यूशंस चाहिए रहते। परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए उतना मेहनत करना या उसके लिए उतना कंटेम्पलेशन करना या रूट तक जाके देखना प्रॉब्लम क्या है, ये जनरल माइंडसेट नहीं रहता है लोगों का। तो इसलिए वो एक हॉप, जैसे वो बंदर एक पेड़ से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे छलांगे मारते रहता है, और वैसे ही अपना माइंड इधर से उधर वो जगलरी जैसा घूमते रहता है। तो अगर हम ये माइंड का ये नेचर देखेंगे और उसका अपना संबंध देखेंगे कि क्यों ऐसा ये हो रहा है, तो शायद हम लोग इस पे जा सकते हैं। दूसरा ऐसा कि एवरी टाइम उसको कुछ इमोशनल या स्पिरिचुअल भी एक स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी चाहिए होता है। मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो भी कुछ है वो उसके ऊपर डाल दो और मैं आराम से बैठूंगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। मैं एक जस्ट एक स्टोरी बताता हूँ। एक किंग रहता है और उसके दो गार्डनर्स रहते हैं। अभी एक गार्डनर है, वो कुछ करता नहीं है, सिर्फ राजा के गुण गाते रहता है, उसका ये करता है, बाकी खुद काम वगैरह कुछ गार्डन में करता नहीं है वगैरह, बाकी सब ऐसे ही पौधे वगैरह ऐसे ही, पानी वगैरह कुछ का वो उसमें फर्टिलाइजर कुछ डालता नहीं है, ऐसे ही रहता है। और दूसरा गार्डनर क्या है कि जो अपना काम करता है, फल फूल सबकी टेक केयर करता है, और जब राजा आता है तो उसको वही बगीचे के फूल फल वगैरह जाके दे देते हैं। तो राजा किसके ऊपर खुश होगा? नेचुरली जो उसके ऊपर फल फूल देता है वो उसके ऊपर ही खुश होगा, राइट? तो इसलिए हम लोग अपने स्वकर्म पुष्प से ही अपने इष्ट देव या गुरु जो भी है उनको प्रसन्न करना चाहिए।
ये हम लोग आइडल बैठेंगे या सिर्फ ऐसे करेंगे तो ये खुश नहीं है, मतलब वो किंग खुश नहीं होगा। इसलिए हम लोग अपना जो भी कर्म है वो करो, और उसमें जो कर रहे हो उसमें अटैचमेंट मत रखो, और वो अर्पण करने के समर्पण भाव से करो। अभी दूसरा एक फंडामेंटल हम देखेंगे कि अपना माइंड कॉन्स्टेंटली क्यों सीख करता है या संकल्प विकल्प क्यों करता है, उसका नेचर क्यों ऐसा है। तो अगर हम देखेंगे तो माइंड और प्राण, मतलब मन और प्राण दोनों का संबंध है। अगर प्राण में स्पंद होते हैं तो मन में भी स्पंद होता है, और उस मन में अगर कुछ ये होता है तो प्राण भी अस्वस्थ होते हैं। तो ये दोनों का बहुत गहरा संबंध है। तो इसलिए अगर हम बाकी भी कोई सिचुएशंस में देखेंगे, अपनी सांस फूल जाती है या कुछ ये होता है, तो वैसे ही माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसका अगर हम मतलब रूट में जाके देखेंगे, तो अगर हम प्राण को अपने ध्यान की अवस्था में या इसमें कंट्रोल कर सकते हैं तो माइंड भी अपने आप शांत हो जाता है। ये दोनों का परस्पर संबंध है। तो ये हम जो मेडिटेशन वगैरह में करते हैं या जो करते हैं, तो बेसिकली हम प्राण के स्पंद को स्टेबलाइज या ये करते हैं, वो ऑटोमेटिकली होता है। मतलब उसमें तो उसमें हम देखते हैं कि अपने मन भी वैसे ही शांत हो गया है। तो यही प्रैक्टिस हम अपने नामस्मरण से भी कर सकते हैं, अपने मेडिटेशन से भी कर सकते हैं। और ये सहज जैसे जैसे ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, वैसे हम हर एक स्थिति में, वर्ल्ड के स्थिति में स्टेबल रहते रह जाएंगे, और वैसे एक्शंस अपने इसमें होते जाएंगे। तो यही है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट मतलब अगर हम बिलीव करेंगे अपने इष्ट देव या गुरु के ऊपर, तो ये प्रवास हम एंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि बाकी गुरु वगैरह वगैरह मिलने के लिए हम इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गुरु से पहले शिष्य अच्छा बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरु तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन शिष्य बनना बहुत मुश्किल है। मैं एक मतलब वो जो स्टेडफास्टनेस या जो ऑनेस्टी है वो होनी चाहिए आपके अंदर, तब गुरु आपको अपने आप मिल जाएंगे। हम गुरु के पीछे ना भागे, अपने आप को ये करें, गुरु अपने आप आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक स्टोरी बताता हूँ यहाँ पे। एक डिवोटी था, और वो संसार से परेशान हो गया, कुछ ये नहीं, सुख वगैरह नहीं मिल रहा है, ऐसा वैसा। तो वो एक वहां पे एक गुरु के पास गया। अभी क्या हुआ कि गुरु भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा ये नहीं था, वो भी ऐसा ही ये था। तो वो उसने देखा ये चेला आ रहा है करके, तो इसको थोड़ा ज्ञान देते हैं ये वगैरह, और उसने उसको ये किया। तो वो शिष्य की उसके ऊपर श्रद्धा बैठ गई। तो बोला ठीक है। तो उसने उसको बोला कि ठीक है, तू एक काम कर, ये मंत्र का जाप कर। और उसको एक मंत्र लिख के दे दिया। वो देवी का एक मंत्र उसने लिख के दे दिया उसको। वो बोला कि इसका जाप कर, तुम्हारा कल्याण हो जाए। अभी उसने तो वो मंत्र लिया, उसको जाप करने लगा। जाप करने के बाद एक्चुअली जो मंत्र दिया था वो गलत था। कुछ ऐसे उसको खुद को पता नहीं था, उसने ऐसे करके कुछ लिख के उस पर दे दिया। लेकिन वो शिष्य की भावना अच्छी थी, तो उसने वो बोला कि गुरु महाराज ने इतना मंत्र दिया है तो मुझे करना ही पड़ेगा। और वो करने के बाद कुछ सालों के बाद उसको वो देवी के दर्शन हो गए। तो देवी को उसको दया आ गई। वो बोला, अरे क्या तुम कैसे, ये तुम्हारा जो मंत्र है वो गलत है, तुम ये गलत मंत्र पढ़ रहे हो, जाप कर रहे हो उसका। तो उसका मतलब अपने गुरु के प्रति इतना ये था, आदर था। वो बोला कि नहीं नहीं देवी, तुम ऐसा मत बोलो, उन्होंने जो मंत्र दिया है वो उसका ही मैं पाठ करूंगा, वही मेरा ये है। तुम कुछ भी मत बोलो मेरे गुरु के बारे में, जो भी जो है वो मेरे उनके ऊपर निष्ठा है, और जो भी है मैं यही मंत्र का जाप करूंगा। अभी ये देखे देवी को भी आश्चर्य हुआ, अरे ये तो मेरी सुनता नहीं है, ये तो उसके ऊपर गुरु के ही ऊपर ये है। तो उसने फिर उसके ऊपर कृपा की और उसको ज्ञान प्राप्ति हुई।
तो जब ये शिष्य उसको गुरु को मिलने गया और उसने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे देवी के दर्शन हुए और ये ऐसा मैंने ये किया और ये ऐसे बोल रही थी, लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं, गुरु महाराज का मंत्र ही सच्चा है। तो उसके गुरु के आंखों में आंसू आ गए। वो बोला कि तू ही मेरा गुरु है अभी, और ये मतलब सिर्फ तुम्हारे निष्ठा से ही ये तुम्हें दर्शन हुए हैं, मेरा इसमें कुछ नहीं है। और वो वहां से चले गए। तो ये स्टोरी बताती है कि एक अपना जो स्टेडफास्टनेस, निष्ठा अगर रहेगी, मतलब गुरु कोई भी हो रहने दो, क्योंकि हर एक गुरु अच्छा ही बताता है, तो उसके ऊपर अगर आपकी निष्ठा रहेगी, भले ही वो निष्ठा मतलब वो कुछ गलत ये कर रहा है या कुछ है, फिर भी उसका एंड रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। बस इतना ही मुझे बोलना था। थैंक्स। बहुत सुंदर सचिन जी। श्रद्धा का अपना जितना पात्र बड़ा रहेगा उतना ही सब फलित होता जाएगा, और उसके ऑन द टॉप ऑफ दैट आइसिंग ऑन द केक, यदि गुरुदेव अपनी लाइफ में आ गए, जो त्रिगुणा सहित है, जो चैतन्य की बात कर रहे हैं, वह त्रिगुणा सहित इसी रूप में, शरीर रूप में ही अपने साथ हो, तो फिर तो क्या कहना है ना। स्वयं उनके मुख से ही वो शब्द निकलते हैं, स्वयं उनके ही द्वारा ये सब कुछ हमें मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। सो हैव दैट ग्रैटिट्यूड। जिस तरह से सचिन जी ने बताया ना, अपना पात्रता बढ़े, हम अच्छे शिष्य बन पाए, हम लोग अपनी साधना कर पाए, हम लोग अपनी सेवा कर पाए, हम लोग सत्संग में रह पाए। ऐसा नहीं कि अपना प्रयत्न जारी नहीं है, आप सभी का प्रयत्न जरूर जारी है, तभी तो ना आप बैठे हो यहाँ पे। तो थोड़ा और इसको दृढ़ बनाए, थोड़ा अपना श्रद्धा और, या प्रॉब्लली वीडियो कई लोग देखेंगे शायद जिनके जीवन में अभी गुरु नहीं है, जिनके जीवन में ये ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए बहुत लाभकारक सिद्ध होगा जो सचिन जी ने बताया कि अपना श्रद्धा रखो ना यार। श्रद्धा रखने में क्या जाता है आपका, हैव दैट इमेंस फेथ। देन आप किस चीज में फेथ रखे हो, वो मैटर इतना ज्यादा करेगा नहीं करेगा ये अलग बात है, बट हैव फेथ इन समथिंग। पत्थर में फेथ रखो, अल्लाह में फेथ रखो, जीसस में फेथ रखो, शिव में फेथ रखो, विष्णु में रखो, ब्रह्म में रखो, गुरु में रखो, सारे एक ही है, अलग अलग नहीं है। किसी में भी फेथ रखो, अपने आप के ऊपर फेथ रख लो, तुम भी वही हो, तुम भी अलग नहीं हो, तुम भी उन्हीं का ही स्वरूप हो, तुम भी गुरु ही हो। तो हैव फेथ समवेयर, कहीं तो फेथ रखो, कहीं तो श्रद्धा रखो, और श्रद्धा ही तुम्हें नैया पार लगा देगी। गुरु कोई फिजिकल बॉडी थोड़ी ना है, गुरु तत्व सब जगह पे सर्वव्याप्त है, वही ईश्वर है, वही तुम भी हो। तो हैव फेथ समवेयर, कहीं तो श्रद्धा रखो, तो श्रद्धा ही हमें नैया पार लगा दी। इट्स ऑलरेडी 9:34। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है या कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। Can I add a point in that what you said now? Yeah, if you want you can add. Yeah, just a minute. Yeah, so in Jesus Christ also says, you know, in Bible, ki when you say with the faith, ki you know, अगर तुम बोलो, पहाड़ों को भी बोलोगे ना, mountains हट जा, means they will move ahead and you will get the way. It means what? In this, when you come here on this knowledge path, the path, even if you have, you know, hurdles like mountains, okay, you just say Hat Ja and it works. Now that, how it works, it's your own faith. That is what it is. So that strength within you, it's there. And again in Santosha, it says, when you are totally content, then what happens? It is the gratitude that comes up. So you are only in that gratitude. And when you are in the gratitude, what happens? Whatever comes is very good. But even if you don't like, even if you say Hacha, it goes off. So both the things are there available to you. Yeah. So let's be with that. And let's take a pause here. Yeah, Someshwar ji, or all of you. Yes, we'll meet tomorrow again. Yeah. Yeah. Jai Gurudev to all of you. हाँ, किसी को कुछ कहना है, कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए।
क्या कुछ कहना है, व्यक्त होना है तो हो लीजिए। कुसुम ताई कुछ बोलना है आपको? नहीं नहीं, बहुत वंडरफुल सेशन था आज का, सुंदर। बस इतना ही। धन्यवाद बहुत। कुसुम ताई, आपने इतना अच्छा बताया भगवत गीता के बारे में। इट वॉज रियली वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू फॉर बीइंग फॉर अस, यू नो, रियली। ऐसे लगता है कि कुसुम ताई आप हमारे लिए ही आए हैं यहाँ पे इस सेशन में। सच में मैं बोलती हूँ। मैं भी बोलती हूँ कि मिस, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, ऑल ऑफ यू। So I belong to you. Yes. 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 Isn't it? So nice, wonderful, awesome. It is awesome. You know, we see the river flowing. Yeah, we can complete it over here. The knowledge, the river that is flowing. It's so beautiful, isn't it? Yeah. So let's be in that. Okay. Jai Gurudev. Don't feel like leaving. स्वल्प विराम लेते हैं। आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं ताकि हम लोग पुनः एक बार कल मिल पाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।